फार्म का रास्ता बहुत ख़राब है. हम लोग गाड़ी वहाँ पार्क कर दिया है. ये देखो, गाड़ी आगे नहीं जा सकता. It's very dangerous. So from here we're hiking down. Let's see. Way to Annie's farm now. Looking for it. यही रास्ता है, कच्चा रास्ता है, गाड़ी नहीं जा सकता है क्योंकि बारिश होके रखा था. तो we're trekking down. Stay tuned because it's gonna be very beautiful. This is the entrance to Annie's farm. After 1 kilometer hike down, finally arrived. I can see the cottage. अभी थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा. Where are the flowers? I don't see any flowers. Where are they? Oh yeah, I can see. The Zuhu farm. 5 p.m. till 5 p.m. So we came at the right time, na? My bad. Wow. Why are there so many people? I wish there was less people, but फिर भी ये तो काफी सुंदर लग रहा है. I can see the hydrangeas, the white hydrangeas, pink ones, and the rest of the flower. I don't know. Look, people are there picnicking with kids, and I think she's the owner, that lady. They're continuously working to keep this area beautiful, neat and clean. Let's go down. Let's go now. Chalo, let's go down and have fun. Keep watching. Okay, there is an entry fee, 20 rupees per person. Cash. Anyone carrying cash? 80 rupees. How much 80. per person? Yeah, No. total. So we have to pay him here, and then we enter. ज़्यादा तो बड़ा जाओ, ना? उधर है ना गाय वो ना? अच्छा, ठीक है से. Okay, let's go. The farmers here are continuously working, na? Cleaning, weeding. What are the words used for gardening? Okay, we're gonna go down there. Let's see. And that's her cute cabin at the stream. Wow, side the pool tahan do sob muri siya yagadli. Stream la side tahan na. I think we should have come during April, spring season, when these flowers bloom, and it looks so pretty. So we are crossing this London Bridge. All right, see. So pretty. Wow. Cute little bridge. Hardly would anyway. What? Slippery. Look at this. Wow, look at that flower. So pretty. And yeah, that's the cute house or cute bungalow. And look at this flower collection. What is this flower called? It's so pretty.
एंड दिस फ्लावर मतलब हाइड्रेंजिया ही है तो got the green different colors of hydrangeas white and I don't know what do we call those flowers lavender bhi hai kya I wish I knew the names of the flowers wow these are so pretty the purple ones see look at this pretty little thing these people are continuously gardening to keep this area as beautiful as possible for us people like us to come and have fun and this is their greenhouse the purple one where is Tongro oh तो कैसा लगा एनिस फार्म आइए अब भी जब बहुत सारे फ्लावर्स खिले होंगे ना तब आना स्प्रिंग के टाइम पे ये भी कितना खूबसूरत है ये देखो एंड जस्ट बाय द साइड प्यारा सा स्ट्रीम फ्लोइंग मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है ये जगह आई विश लोग कम होते वाह उस तरफ जाने का मन है मुझे उस तरफ इतना अच्छा फ्लावर्स है कलरफुल वंस येलो पिंक और मुझे आई एम इन लव विद दिस वंस these are so pretty see I want to go like in between and take photo huh Adli Yeah, can you go? so we like go in between this side and take photos this is so pretty this flower is so pretty there's a pink one over there and let's go this way ये भी कुछ फ्लावर है खिलने वाला है कितना खूबसूरत लग रहा है and this one look at this I think this is lavender na I don't know about flowers. or oh not lavender that what do we call I forgot the name चलो मुझे इधर एक बार लेके देखो well हम लोग ने यही फूल सबसे प्यारा लगा अभी फ़िलहाल ये सीज़न है इसका एंड ये तो हाइड्रेंजियास है ये सारे एंड दैट पर्पल वन आई एम नॉट श्योर whether it's lavender or the other one I forgot the name okay so now we'll go towards that swing area तो वहाँ पे जो लोग थे वो सारे निकल रहे हैं तो हमारे लिए जगह खाली हो गया है तो we'll spend some time over there and स्ट्रीम के पास भी थोड़ा फ़ोटो वोटो लेंगे बहुत ही बढ़िया लग रहा है एंड मुझे ये वाला फ्लावर भी बहुत अच्छा लगा पता नहीं इसका नाम भी क्या है ठीक है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू नो द नेम ऑफ दिस फ्लावर सो प्रिटी एंड सी बहुत सारे लगा हुआ है ऑलराइट सो लेट्स गो ओवर देयर देखो ये भी कुछ फ्लावर है ये भी मर गया है आई मीन इसका सीज़न ख़त्म हो चुका है आई लव द स्मॉल लिटिल स्ट्रीम और ब्रुक्स जो भी है जो भी नाम देना है एंड वो दोनों दे आर टायर्ड दे वांट टू गो बैक हाँ दे आर टायर्ड वी शुड कम हियर एंड हैव पिकनिक यार इतना बढ़िया जगह है ना Harley is tired. She's tired of taking photographs. Her excitement is gone. Then what is happening? My migraine. Migraine is happening. Then have Red Bull. Kawa. Okay. We're going towards, following the stream towards the flower. I don't know कौन सा flower है देखते हैं पास जाके बहुत प्यारा लग रहा है इतना बड़ा बड़ा फ्लावर क्या है ये कौन सा फ्लावर है ये
डालिया ना, डालिया है शायद. Can't see clearly. I think it's dahlia. I'm not sure. थोड़ी देर पहले ये लड़की इतना वो फंसी एक कर रहा था कि माइग्रेन हो रहा है, आउची लग रहा है, घर जाना है. अब देखो निकोलस को पकड़ लिया और अब तक खुद का वीडियो फोटो बनवा रही है. रेड बुल पीने के बाद तुम्हारा माइग्रेन खत्म हो गया क्या? काम किया ना, थैंक्स टू मी. चलो तुम लो ना नए फोटो को भी क्या. आउची बुरी. चलो हम लोग निकल रहे हैं एनिस फार्म से. There are not much flowers in bloom right now. We should visit in the month of I think April May. तो आना ज़रूर with your family and have a little picnic over here. They've got good table arrangement, place to sit and explore and enjoy with your loved ones. तो काफ़ी अच्छा लगा हमें भी. अभी तो हमें ऊपर चढ़ना है कार की तरफ, ठीक है. तो इट्स गोना बी टायरसम. तो यही पे समाप्त करते हैं आज का वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.